Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh Alia. Our today's topic is castration, a topic specifically requested by one of my viewer come student, and because this topic is not a part of any syllabus or requested by any particular group of students for answering any questions, so I haven't prepared much presentation with much literature. हम आज इस पे एक जनरल एस्पेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस, कास्ट्रेशन है क्या, इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसके मोरल, एथिकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, इन पे एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं. If you can go through the chat box or you can see the nature जिस पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह की क्वेरीज थी इस टॉपिक से रिलेटेड. सो लेट अस सी कास्ट्रेशन. द लिटरेचर में कास्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल, पर साइंस में, बायोलॉजी में कास्ट्रेशन का टिपिकल मतलब हो सकता है द रिमूवल ऑफ द reproductive gonads. That is, in case of female, the removal of ovary, that is referred as oophorectomy. And more general, और भी ज़्यादा speaking, a very common castration term का use किया जाता है for the removal of the testicles. और कभी-कभी testicles के साथ-साथ external genitalia का पूरा region including the scrotal sacs and the penis. Male reproductive system हम लोग देख चुके हैं, तो ये सारे terms already आप जानती हैं. हम पिछले वीडियो में in details anatomy of male reproductive system में ये सारे terms हम देख चुके हैं. तो ये removal of this entire testis or the reproductive genitalia including the scrotum and the penis, पूरे दोनों ही condition में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिमूवल को हम ऑर्किडेक्टॉमी या कास्ट्रेशन इन जनरल टर्म में यूज करते हैं. और कास्ट्रेशन जब दो स्टेजेस पे किया जाता है, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी. तो यूजुअली कास्ट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है. और आफ्टर प्यूबर्टी जिन मेन को कास्ट्रेटेड किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज यूनक्स. दिस इज a term used for the castrated male or the males, that is eunuchs. In such cases, in eunuchs, the sex drive is completely or highly reduced or completely stopped due to the removal of the testis and the removal naturally testis को अगर completely remove कर दिया जाए तो टेस्टिस के जो मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, उनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा. हालांकि कंप्लीटली बंद नहीं होता है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट टू सम एक्सटेंट एड्रिनल इज आल्सो प्रोवाइडिंग द गोनाडल हार्मोन्स. तो वो बहुत ही रिड्यूस रहता है, इतना नहीं रहता है कि मेल सेक्सुअल फंक्शंस एंड फर्टिलिटी को अच्छे से मेंटेन किया जा सके. So the castration is a mean of sterilization, it can be said. And that sterilization has different aspects in so far as castration is concerned. एक social aspects हैं, psychological aspects हैं, medical treatment में इसके बहुत सारे benefits हैं, and इसके अलावा कुछ moral and ethical aspects भी हैं इस phenomenon के. It's that is the castration, and the castrated person is called as eunuchs. और eunuchs की जो इनका population एक जमाना था, historically eunuchs का population पर्पसली क्रिएट किया जाता था, बनाया जाता था, एक प्लाटून बनाया जाता था फौज में. एम्पेरिकल कल्चर जब चलता था तो आर्मी में एक स्पेशल पोजीशन होती थी यूनक्स की. वॉलंटरीली दे यूज्ड टू कास्ट्रेट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस ऐसे रखे जाते थे कि कास्ट्रेटेड पर्संस आर ओनली रिक्वायर्ड, और दैट वाज नॉट एनी पोजीशन और कोई हे दृष्टि से देखी जाने वाली बात नहीं थी, बल्कि
अच्छे पोजीशंस पे लाइक द मिलिट्री कमांडर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, देन पॉलिटिकल स्टेटस, मिनिस्ट्रियल पोजीशंस भी दिए जाते थे यूनक्स को इन द imperial culture or in the emperor's army. So that is one aspect. Historically, the castration has got a very unique position, you can say, for the discussions. Now, this castration, whatever the reason may be, जिस भी वजह से कास्ट्रेशन किया जाए, इस कास्ट्रेशन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, दैट वी कैन सी हियर, लाइक जिस तरह से वुमेन में मेनोपॉज कंडीशन के बाद कुछ जो सिम्टम्स दिखते हैं, कास्ट्रेशन के बाद, रिमूवल ऑफ गोनाड्स के बाद, टेस्टिस के रिमूवल के बाद नेचुरली हार्मोनल प्रोडक्शन काफी स्टॉप हो जाता है या काफी डिक्रीज हो जाता है, दैट रिजल्टिंग इनटू अ नंबर ऑफ effects like the reduction of muscle mass, physical strength, body hair typically reduced. The eunuchs are usually beardless, and mustaches and beards are lost or not developed, prevented from developing. Breast enlargement is also common. The most familiar example, castration prevents cuckoldry, that is sharing of wife. Eunuchs are often used as harem guards. जो राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी, उनके हरम बनाए जाते थे, तो उनके बॉडी गार्ड्स, उनके स्लेव्स, यहाँ पे कुछ डिमोरलाइजिंग पोजीशंस भी यूनक्स के होते थे. They have been used as the slaves of those queens or the wives of the emperor. तो इस तरह से कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री है कास्ट्रेशन की, और ज्यादातर जब वॉर में जो कैदी पकड़ के लाए जाते थे, उनको कास्ट्रेटेड पर्सन की तरह, स्लेव्स की तरह रखा जाता था. You engaged as servants. So that is comparatively lower position, but higher अच्छे reputed status भी eunuchs के होते रहे हैं historically. Now these are the side effects of the castration. Like this is the testosterone. जब ये suppress किया जाता है, तो hot flashes, impotency, that brings highly psychological effects, that is impotency, then thinning of bones, diminishing muscle mass, increasing breast size, weight gain, mood changes. कभी कभी तो castration के side effects में suicidal tendencies, severe depression, severe psychological effects भी observe किए गए हैं. So this is the definition. What is castration? Now let us see castration की जरूरत कहाँ कहाँ होती है. कास्ट्रेशन की अगर हम जरूरत देखें, तो कास्ट्रेशन इज a phenomenon that can be used for in surgical manners also. The castration is done for many purposes. Castration that is the removal. It has many aspects. That is, first is surgically remove. बहुत तरीकों से कास्ट्रेशन किया जा सकता है. सर्जिकल से भी पहला ये होना चाहिए था. फर्स्ट टाइप इज द मैनुअल, और दिस इज रादर कास्ट्रेशन के टाइप में हम पहले देखें. वॉलंटरी कास्ट्रेशन, हिस्टोरिकली वॉलंटरी कास्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि एम्पेरियल कल्चर के समय एक शर्त रखी जाती थी, बकायदा एडवर्टाइज करके कास्ट्रेशन को एक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रखा जाता था, और उनकी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशंस होती थी. तो दैट इज वॉलंटरी कास्ट्रेशन. देन सर्जिकल कास्ट्रेशन. मैनुअल कास्ट्रेशन इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस that is done with the help of certain mechanical instruments, one of which is Burdizo clamp. That is after the name of this Burdizo
क्लैम्प, इस क्लैम्प की सहायता से क्रश करके मैनुअली इनएक्टिव बना दिया जाता है टेस्टिकल्स को और seminiferous tubules को. That is a very painful process, and this has been done in the 15th and 16th century. The medical surgical processes बहुत इवॉल्व नहीं थे उस दौरान 15-16 सेंचुरी में कास्ट्रेशन इस तरह के मैनुअली क्रश करके टेस्टिकल्स को नॉन फंक्शनल बनाया जाता था. So that is one type of that is the manual castration. Then surgical castration is a process in which officially or surgical remove करके this is the surgical castration. This is done for the treatment of several ailments, like one of which is the prostate cancer or testicular cancer, or the overgrowth of enlargement of prostate gland. In conditions में, in medical ailment conditions में castration से remove किया जाता है testis को by the process of surgery, and that brings about here the surgical or orchidectomy is being done here by the cords को divide करके cut करके remove करते हैं, और उसके बाद these testicles bodies in the scrotum are removed along with, अगर जरूरत पड़ी, अगर requirement है तो पूरा external genitalia region को भी remove किया जाता है. And this chart, this graph is showing this graph is showing how the testosterone blood, testosterone level in blood is comes down after this surgical orchidectomy of or orchidectomy or the removal of these testicles. Now, this is the surgical castration. Then another method of castration is chemical castration. That is chemically certain by the injection or by oral introduction. Several types of chemically also the castration can be done, or that is the testicles may be made non-functional. That by the process of injection or by the oral supply or oral intake of the medicines. These activities suppress the testosterone, and the sex drive is suppressed, and that is mainly used for sexual offenders, that is the social conditions जिसमें कि sexual sex crime control करने के लिए, rapists के लिए, sex abuses के control करने के लिए castration को as punishment भी use किया जाता है, और treatment of for surgical processes में treatment के लिए clinical purposes में भी castration use किया जाता है for the treatment of prostate cancer and testicular cancer, prostate enlargement, prostate cancer, testicular cancer. For the treatment of these problems, the surgical castration is also done. Now, this is the process of chemical castration, that is, drugs are suppressed, these drugs are injected, oral pills के tablets के form में भी किया जाता है drugs को. Then that may do the two causes. Either they stop the functioning of the testicular seminiferous tubules and stop the production of the male hormones, or female hormones and drugs are given to stop the male hormones functions, and for the treating of the prostate glands, such as leucine, are injected. These are the chemicals given for the treatment of prostate cancer. These do the depletion of male hormones in the testis and shut down the sex drive. And this implementation process, these are the different ways in which these drugs are given. तो हम आज general aspects, social aspects पे और general areas of castration ज़्यादा देख रहे हैं, ethical, moral, psychological,
in comparison to the biological surgical processes and drugs, etc. However, some of the drugs can be taken into consideration जब हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे एक important group of the group of drug is that is mainly used for castration purpose is ADT, that is androgen deprivation therapy. This androgen deprivation therapy, ADT, is a chemical mode of treatment. This is androgen deprivation therapy, either by inducing the female hormone and related injections, or by giving the drugs that suppresses the production of the androgen and in turn the testosterone. So these are the chemical methods. And then the last but not the least is the method that is by radiation therapy. Radioactive rays or X-rays or radiation therapy is also very common in practice for the treatment of the prostate cancer, testicular cancer, prostate enlargement. The symptom is the difficulties in urine passing, etc. This castration has got this method, or this phenomenon has got very interesting history that we will see after we see the side effects. This castration causes a number of effects. जिसको हम साइड इफेक्ट की तरह अगर कंसिडर करें तो सिर्फ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ही नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आर आल्सो वेरी मच to be noted points. Psychological effects, then social effects, moral and ethical aspects are the points to be considered while studying the castration apart from the surgical chemical methods or of the treatments. Side effects, as we have already seen, like the characters or the symptoms appearing into the women after the menopause, hot flashes, impotence, thinning of bones, diminishing muscle mass, increase in breast size, weight gain, mood changes. These are closely related side effects or the symptoms of castration. So hot night sweats, lots of libido or sex drive that results into the impotency, that is जिसको नपुंसक कहते हैं, roller coaster of emotions के बहुत ज़्यादा changes होते हैं that results into mood swings. So these are the accumulation of body fats, breast development. These are the side effects of the castration process. Now ethical process में castration को बहुत जगह as punishment भी यूज किया जाता है, सेक्स क्राइम के कंट्रोल के लिए या सेक्सुअल अब्यूजेस के ऑफेंस के लिए, या as the treatment or punishment for the rapists or the sex crimes or child abuse के cases में इस तरीके से. And that is the question of my viewer, that why it is punishment, because there is another effect of castration, that is the castration and castration, its relationship with the castration is all to some way it is, castration is related to longevity, that it increases the lifespan of the castrated person or of the man की longevity. It is also हालांकि ये बहुत established fact अभी नहीं है. It is said, it has been observed by mainly two groups. और ये भी बड़ा interesting है. It is also this castration and longevity is the fact that also has been बहुत लंबे समय से
ये साइंटिस्ट या डॉक्टर्स या social activists, they are observing, and many data collections have been done, surveys have been done, and to collect the facts कि कितना ये सही है कि longevity या लाइफ स्पैन बढ़ता है। इसमें हम दो important observations consider कर सकते हैं। James Franklin in 2010, person from the Hampton Institute of Medicine, Chicago, he has also considered or surveyed the effects of castration in case of child abuse, and he then in 1993 the Ibashan, Nishle and colleagues reported the fact that compared lifespan of the castrated average has been observed to be 65.5 years, not significantly different from 64.3 years for normal singers. ये सारा इंटरेस्टिंगली एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कास्ट्रेशन का जो ग्रुप्स हिस्टोरिकली जो ऑब्जर्व किए जाते रहे हैं, एक तो हो गया यूनक्स जो आर्मी में, फौज में, स्लेवरी में, हरम्स में यूज किए जाते हैं, और दूसरा कास्ट्रेशन का बहुत बड़ा ग्रुप ऑब्जर्व किया गया है, नोटिस किया गया है, दैट वेर रिलेटेड टू द सिंगर्स ग्रुप। जो कोर्स बनते हैं, जो सिंगर्स के ग्रुप्स आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, खासतौर से रशिया में, इटली में, चाइना में, जो कोर्स के ग्रुप्स हैं उनके बहुत सारे, उन पर बहुत ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं। और अभी हम एक हिस्ट्री के केसेस देख रहे हैं, तो ये देख लें, फिर हम लौटेंगे कि क्यों ऐसे सिंगर्स का ग्रुप, क्यों बहुत ज्यादा ग्रुप्स कैस्ट्रेटाइल का ग्रुप्स सिंगर्स में क्यों ज्यादा है, दैट वी विल सी आफ्टर दीज केसेस। इन 2012 Kyung Jin Min and colleagues examined for 81 Korean eunuchs, and average lifespan was observed was 70 years, almost 17 years more than intact for the normal male of similar socio-economic status, supporting life longevity. But it is not yet established जो medical reasons ऐसे ये हैं जिनकी वजह से life longevity बढ़ती है। There are, however, there are assumptions, बहुत सारे assumptions दिए गए हैं कि aldosterone और या testosterone और androgen के बहुत सारे negative effects observe किए गए हैं। increasing blood pressure, cholesterol level high होता है, cardiovascular diseases के high chances होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के, हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजंस ऑब्जर्व किए गए हैं मेल हार्मोन्स की वजह से। तो हो सकता है कि लाइफ स्पैन बढ़ाने में भी कास्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका कभी कभी बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी इस प्रोसेस पर को लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाली स्थिति पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, बल्कि एज पनिशमेंट इस प्रोसेस को ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि सेक्स ड्राइव का अर्ज कम करके, काफी हाईली रिड्यूस करके सेक्स अब्यूजेस, सेक्स क्राइम्स को कंट्रोल करने का एक मेजर कंसिडर कर सकते हैं हम इस मामले में। कास्ट्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो अच्छा, अब हिस्टोरिकली हम एक फैक्ट देख एक फैक्ट हमने देखा था कि हिस्टोरिकल कास्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। In some 4,000 years back, the first file record of deliberate castration has been observed in China, that is Junerian city of Lagash, and empirical culture में एक केस ऑब्जर्व किया गया है। पहला जो फाइल रिकॉर्ड है that has been observed and that persisted, this culture was lasted, it is said that 1911 में लास्ट एम्परर जब तक थे, उस एम्परर डायनेस्टी खत्म होने के साथ साथ ये इन 17th century 70,000 eunuchs were employed
in the last Ming dynasty, जिसको कहा जाता है कि last emperor probably he was in 17th century. It is recorded that empirical culture, their dynasty at that time, 70,000 eunuchs were employed in his uh, uh, army, in his platoon. Now, this castration, some certain other interesting facts that that is the effect of castration besides the side effects जो हमने general side effects देखे सबसे बहुत important point है that one question my viewer will ask why it is punishment. It is punishment as the name says here, unmanship, नपुंसक बनाना, नामर्द बनाना, मर्दानगी को चोट करता है. That is very much that has great psychological effect. Even if for the treatment, for the purpose of treatment, अगर ये castration को use किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की, बहुत इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है. बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, बहुत डिप्रेशन एंड एंजाइटी के सिचुएशंस आ जाते हैं. To control these all conditions, several workers are doing on these aspects also. So these are certain moral aspects, social aspects, ethical aspects of castration. Then last but not the least, lifespan we have seen, the social aspects we have seen, moral aspects we have seen. Now, one very important aspect, yet I think important point to be noted is skeleton, the effect of castration on the skeleton of castrati. That is not very much known, but it has been observed. The studies have published by Maria Belcastro in 2011 and her team. They have shown that in the group of singers, one legendary singer was Farinelli, that is in 17th century. He was very much famous singer. It has been seen that his bones have been strikingly long limb bones he had, with incomplete bone fusion and very low bone density, that is osteoporosis. In some others, the front end of skull cap was severely affected by the process, by the phenomenon hyperostosis and hyperostosis frontalis interna. That is a condition in which the inner surface of frontal bones, the frontal bones is symmetrically thickened, like that has been observed in the menopause women. कुछ frontal bones काफी thick हो जाते हैं. Then another observation was done by James Franklin in 2010. He from Chicago. He has also shown that early castration is particularly dramatic form of child abuse, and that results into the excessive thinning and lengthening of the limb bones. So these are some of the very important noticeable points on in castration phenomenon, and I think this is enough for today. If some more information or any more query you want, you can ask, you write in the chat box. So before I end that, two more points I just forgot to mention. That is we have seen the post-pubertal castration, but pre-pubertal castration was also in practice in the historical times. जिसमें puberty attain करने के पहले, that was mainly implemented in the course, in the group of course जहाँ पर children को रखा जाता था. आप जानते हैं कि secondary sexual character में एक बहुत important phenomenon है thickening of voice. Was after the development of the apples, the Adam's apple, that is यहाँ पे neck पे जो bone grow हो जाता है, आप
the puberty is about to be completed, उस एडम्स एप्पल के ग्रो करने के पहले प्री प्यूबर्टल 7 to 9 years के बच्चों को कास्ट्रेट किया जाता था टू जस्ट प्रिवेंट देयर थिकनिंग ऑफ वॉइस, thickening of voice, or sharpening or sharp pitch or thin pitch of to maintain the thin and the sharp and the high pitch of the singers. Pre-pubertal castration was also very much in practice. That is, yet it may be, it is not very much established. आज भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि legal aspects अब बहुत सारी countries में लीगल एस्पेक्ट्स भी इसके, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही इसको अभी तक लॉ में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि इसे हम पनिशमेंट की तरह कास्ट्रेशन को यूज कर सकें। बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, बट चाइना की तरह, चाइना पर्टिकुलर एरियाज ऑफ चाइना एंड सम अदर कंट्रीज, देयर आर प्रोविजंस टू पनिश द और टू कंट्रोल द सेक्सुअल क्राइम्स. So these are certain facts, I think, which are interesting facts where we have seen in this phenomenon of castration. I think it will satisfy you. We can go for further queries if there are any. Do like, share, and subscribe my channel, and press the bell icon to get the further notifications. अब हम इसके बाद भी कुछ केजेस रिलेटेड क्वेरीज आए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, स्कोप्स के बारे में, बीएससी के बाद फिशरीज के स्कोप्स के बारे में, और साथ साथ जो एंडोक्राइनोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजी से बहुत टॉपिक्स हैं. So we have enough topics, so we'll discuss and we'll meet soon. Thank you so much.